बाजार कैसे उसे रीड कर रहे हैं? करीब करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं। संतोष राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूएस से बात करने के लिए। संतोष, गुड मॉर्निंग। आपको एंड गेम कहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है? जो ज़ेलेंस्की जी की कमेंट्री है कि नेटो में हम नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, वो तो काफ़ी डविश लग रही है। शायद वो मामले को डीएस्केलेट कर सके, लेकिन बाइडेन साहब ने जाके जो इम्पोर्ट से बैन लगा दिया, हाउ डू यू सी थिंग्स डेवलप फ्रॉम हियर? तो हाँ, जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि नेटो ज्वाइन नहीं करना है, तो ऐसा लगा कि शायद पुतिन को ऑफ रैंप मिल गया है, और मार्केट आल्सो kind of went up on that news, but it was very short lived, क्योंकि फंडामेंटली there is still long way to go. अभी तो एंड गेम अभी नहीं दिख रहा है अभी मार्केट को. There is lot of volatility, but underneath all this, ये यूक्रेन वॉर तो एक एडिशनल लेयर था. तो फंडामेंटली the macro variables for US, macro factors for US are still bad. High inflation and rising interest rates and slowing growth. These are the three factors that are underlying the US economy. तो वो तो वैसे ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा. ये वॉर एक एडिशनल लेयर आया है, शायद इन्फ्लेशन और बढ़ाएगा, पर जल्दी लाएगा. और तो आई थिंक दैट वाज द होल थिंग. सो वो फंडामेंटल्स है. नेक्स्ट वीक फेड चेयरमैन बात करने वाले हैं, देखेंगे क्या बोलते हैं. हमको पता है 25 बेसिस पॉइंट करने वाले हैं, पर कितने करने वाले, 6 या 7, वो शायद अंदाजा मिलेगा. तो अनसर्टेनिटी है, वॉलेटिलिटी है, अभी कुछ पता नहीं, और थोड़ा डाउनसाइड है मार्केट में. वैसा दैट्स द प्रोजेक्शन राइट नाउ. संतोष, ऐसे कौन से इंडिकेटर होंगे जिनको आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे, आफ्टर विच आपको कंफर्ट आएगा वापस बायर रिटरेट करने पे, चाहे इमर्जिंग मार्केट्स या डेवलप मार्केट्स लाइक यूएस? क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट मार्केट्स आर बिकमिंग चीपर. हर एक बीते हुए दिन में यूएस मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट चीप होते जा रहे हैं. तो आप कौन से मॉनिटर करेंगे इंडिकेटर्स जिससे आपको बाय सिग्नल मिलेगा? Inflated so high that तो गिरा है, पर और गिर सकता है. Especially the technology stocks and all that, they were way overrated. They have to correct themselves. So I think that's the thing. It's a very relative term. I think the ball has shifted to the value side. I think the growth is going to take a back seat for now. I think oil will be a big catalyst. अगर वो शायद it has peaked, and experts का कहना है कि शायद और थोड़े 1-2% ऊपर जाके शायद it's going to peak at this point, and then it will start pulling back. And anything below 100, I think, will be a very good indicator that things are going back to normal. And then other than that, I think inflation is a big factor. We have to see how aggressive he will be, Fed chairman, in tamping inflation. That's a big factor. So I think those are the two things. Any indication that the inflation can be controlled and job market kind of takes off again, which it is, it's a time, and that's a plus point for US. I think a good job market. Overall, I think the US economy is good. The consumer is strong. The corporate balance sheets are strong. So the underlying economy is strong. It's just these macro variables that are driving the uncertainty and volatility. So I think oil coming down will be the biggest factor, and the dollar coming down also will be a big factor for the emerging markets also in that sense. मिस्टर राव, गुड मॉर्निंग. मानसी दिस साइड. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि डॉलर और साथ ही ऑयल प्राइसेस में जैसे जैसे स्टेबिलिटी आना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि करंट लेवल्स पर देश और दुनिया जो है ये ऑयल प्राइसेस को अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं. बट इन सिचुएशंस में भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगर समझने की कोशिश करें, कमोडिटीज़ में जो एलिवेटेड एक्शन देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलरली रशिया यूक्रेन वॉर के चलते वीट प्रोक्योरमेंट बिल पर इसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, पर्टिकुलरली क्राइसिस, क्योंकि ओवरऑल देखने को मिल रहे हैं ग्लोबली मल्टीनेशनल ट्रेडर्स जो हैं वो अब भारत की तरफ मुड़ते हुए दिख रहे हैं. एक बड़ा प्रोड्यूसर जो है काफ़ी हद तक कई सारी कमोडिटीज़ का, पर्टिकुलरली वीट का. इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और कमोडिटी में जो एलिवेटेड एक्शन है ये किस तरह से बेनिफिट होता हुआ आगे दिख सकता है? I think that is a big issue. I think fertilizer prices, commodity prices, and gasoline goes into everything, in the fertilizers and everything. So I think that's a big factor. Commodity prices will continue to go up.
There's nothing to stop it at this point because of the scarcity factor, this whole ban on Russian everything. And Russia hasn't shown their cards yet. They haven't reacted to what Biden is doing yet. So let's see where Russia, what Putin wants to do, because they are the roughly 40% of the wheat comes from those two countries. So I think that's going to be a big factor, and that's what's scaring the market, and that's what's putting a lid on the market. I think that's why there is more downside. But commodity prices, in terms of the stock market, I think all the commodity stocks are doing very well, and they will continue to do well because that's where the demand is, and we need that more and more. तो देखिए कहाँ होता है, the imbalance तो है, supply demand imbalance तो है, and that's going to favor the commodities and the value stocks more than the growth stocks. ठीक है संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज 18 आवर्स स्वदेश को आप समय दे रहे थे, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। दो टेक्निकल